आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10 साइंस का बोर्ड पेपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द एमसीक्यू हियर. So the first question here is, in which of the following situation a chemical reaction does not occur? Milk is left open, curd में change हो जाएगा, grapes में fermentation होगी, an iron nail is exposed, again rusting होगी. तो answer here is melting of glacier. Next, in order to prepare hydrogen chloride gas in a humid atmosphere, the gas produced is passed through a guard tube. अब guard tube में क्या present होगा? It is a calcium chloride which is present, CaCl2. Next, the property of virtue of by which solid material can be drawn into thin wires is called its ductility. ठीक है. Select the following hydrocarbon containing single bond and a triple bond. तो बेंजीन में मल्टीपल होते हैं, डबल बॉन्ड भी होता है और सिंगल बॉन्ड भी होता है. हेक्सेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा. ब्यूटाइन में ट्रिपल बॉन्ड भी होगा और सिंगल बॉन्ड, पर इन्होंने बोला है कि सिर्फ वन सिंगल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड. सो आंसर हेयर इज प्रोपाइन. नाउ नेक्स्ट वन हेयर इज the essential element taken up from the soil by the plant synthesis for the protein. Answer here is nitrogen. Now the next question, select the true statement about the lymph. So here the true statement is that B and D is the answer. That is, lymph contains some amount of plasma protein and blood cell, and lymph vessels carry lymph through the body, finally open into a larger vein. So option B is the correct. That is, B and D are the true option. Next, the plant like rose, banana must have lost the capacity to produce seeds. Next, in a bisexual flower, male gamete are present in the anther. A is the correct option. Now next is, when a pure tall tea plant is crossed with a pure dwarf, what percentage of the tall plant in F1 and F2? F1 में तो 100% आपका tall ही होगा. F2 में because हमने इसको pure tall से क्रॉस ब्रीड किया था, विच मीन्स 75% विल बी टॉल देयर. सो सी इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज? सो -1 तब होगा व्हेन ऑब्जेक्ट image is formed at the same place, and that is by using this focal length we have to find out. So focal length here is 20. When we get the same size when the object is at center of curvature, which means answer here is 40. An optical device placed obliquely in the path of a narrow parallel beam and it get laterally. So lateral occurs only in case of glass slab. So here C is the answer. Now next is here, next question is from the physics. A piece of wire of resistance R is cut into lengthwise into 3 identical. So each one possess resistance of R by 3. So in parallel we write R by 3, R by 3, R by 3 in the reverse form. So net resistance will be 9 by R. Now when we compare it with R1, so the ratio will become R1 by R is equal to 1 by 9. हमने क्या किया था, वायर को 3 इक्वल लेंथ में ब्रेक किया तो एक की रेजिस्टेंस हो गई R by 3. अब जब मैं इसका पैरेलल में निकालूंगी तो इट विल बिकम R by, क्योंकि रिवर्स करके हम लिखते हैं 3 by R, 3 by R, 3 by R. सो इट कम्स आउट टू बी 9 by 3. ये इक्वलेंट हो गया इसका, ठीक है. 1/R ये इक्वलेंट है. जब इसको मैं रिवर्स करके लिखूंगी तो इट विल बी R by 9 इज R1 जो इक्वलेंट हुआ. तो R1 by R विल कम 1 by 9. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. Now next is a 220 volt is the source and 11 watt the resistance of the filament when it glows with the power supply. So we have to find out. So here power is equal to V square by R. So V here is 220 into 220 divided by power, because we have to find out the resistance. So power here is 11. So 11 into 2. So 4400. So first A is the correct answer. Now next is the minimum number of identical bulbs rating 4 volt, 6 watt can work for 240 volt. तो इनिशियली सबसे पहले हमें इसमें रेजिस्टेंस निकालनी थी बाय द फॉर्मूला R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी. रेजिस्टेंस आ गई हमारी 2.6. अब इसी के लिए हमें करंट कितना चाहिए, दैट कम्स आउट टू बी 1.5. तो अब हमें 240 के अगेंस्ट मिनिमम रेजिस्टेंस कितनी चाहिए, 160. तो अब हमें ये निकालना है कि n नंबर सीरीज़ में कैसे ज्वाइन हुआ कि 160 आ जाए. तो 2.6 एक रेजिस्टेंस है,
तो 160 के लिए नेट कितनी लगेंगी, नियर अबाउट 61 आएगा, तो लेस देन वैल्यू हमारी यहाँ पे 60 हो जाएगी. आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, द फूड चेन given below, select the most efficient food chain in the term of energy. So smallest food chain having the highest energy, so C is the answer. Next, 16th question, which of the following gets biomagnification at different level in a food chain? Which of the following get biomagnified? So answer here is DDT.